I'm gonna press record. See that up on the him. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. I hope you're all doing well. इंशाल्लाह आज हम चैट एंड चाय के एपिसोड 6 लेकर आए हैं और जिसका टॉपिक है फ्रॉम सेल्फ डाउट टू तवक्कुल, trusting Allah's plan over your fears. Hmm. Daniela से जानते हैं, but you would like to share with us today. Well, I guess before we started this, we were just having a conversation, and then we came to our live, and I think it just was going on because a lot of us may think that, you know, maybe we're not good enough, or maybe we're not heading in the right direction. What if I'm, you know, all these what ifs or shoulds and whatever, all this self-doubt. And it's sneaky, you know, because sometimes we think that these self-doubt or the fears, it acts like a protection. It pretends to act like a protection. But really what I think it does, and I think, you know, just by having this conversation before, Anam, is that what it does is that it can steal our obviously our inner peace, our presence, and our purpose. And yet in these very moments, Allah reminds us always that He's closer to us than our jugular veins. And when we sink into that tawakkul, into what Allah presents to us, then we can grab it like with two hands, you know, and go, okay, Allah, I don't know what's coming, but I know that you will give me goodness. Even if I think it's bad, there's always goodness. And so it's a real leap of faith, you know, it's a real leap of faith, I think. You're so right, and sometimes it gets really, really hard to see what is actually going on. इतनी ज़्यादा thinking चल रही होती है. We are not good enough. Like constantly being in a state of um, not Yeah. being grateful, not being Mm. grateful, Yeah. and couldn't able to see that we have something as well. We are being blessed with something. And subhanallah, just a few days back, मैं वो पढ़ रही थी कि अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि अगर तुम उठे हो, तुम्हारे पास सेहत भी है, तुम्हारे पास छत भी है, और तुम एक अच्छी हालत में उठे हो, ये दो तीन चीजें जो आपके लिए जरूरी हैं बस. इफ यू हैव दैट, यू शुड बी ग्रेटफुल अबाउट इट. Mm. और इसको तो हम कुछ समझते ही नहीं है. हमने तो एक अपना वो बनाया हुआ होता है कि हमें ये मिलेगा तो हम वी आर गुड. देन हम इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे तो हमें सेटिस्फेक्शन हो जाएगी. आ लालच तो खत्म, लाइक कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ने की वो तो खत्म ही नहीं होती है. आई डोंट नो कि रादर लालच इज अ गुड वर्ड और नॉट, इधर सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन आगे बढ़ने की जो हमारे अंदर वो है कि हम आगे बढ़ते जाए वो तो खत्म नहीं होगी. तो और इसी चक्कर में हम अपना आप भूल जाते हैं. what I've seen, what I've observed as well. So it's like बहुत ज्यादा हम डाउट्स में चले जाते हैं, बहुत सारी हम कंफ्यूजन्स में चले जाते हैं. हमें नहीं समझ आ रहा होता हमें क्या करना चाहिए. इतनी ऑप्शंस हैं, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है.
और अगर कोई इधर उधर से नहीं भी कह रहा तो अपने दिमाग में इतनी थॉट्स चल रही हैं, इतनी थॉट्स चल रही हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। और फिर जब हमें समझ नहीं आता तो फिर हम रात दिन के हम कुछ स्टेप उठाए, हम उधर ही बैठे रहते हैं और फिर थक हार के जो है वो लेट जाते हैं। और फिर इट्स लाइक एनर्जी आपकी जा रही है, एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है। और हम इन सब प्रोसेस में ये भूल जाते हैं कि ये जो एक अपॉर्चुनिटी भी हमें नजर आ रही है, हमें मिल रही है, वी शुड बी ग्रेटफुल अबाउट इट। और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक निकलने का तरीका है कि हम उस सिचुएशन में जिसमें हैं हम उससे आगे बढ़े। लेकिन हम लोग अक्सर औकात उस स्टेट में चले जाते हैं कि हम लोग कह रहे होते हैं कि नहीं, लाइक इन रिलेटेड टू द जॉब अगर हम देखें तो एक मेरी डिजायर्ड जॉब नहीं है, उसका लाइक जगह ठीक नहीं है, ये है वो है, लाइक डिफरेंट हम उसके साथ अटैच कर देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से मिल गया है। और अगर हम ये भी देखें तो हमें ये भी पता चलता है कि मांग तो हम अल्लाह से रहे थे ना, तो अल्लाह ताला ने तो हमें कुछ उस तरह से ज्यादा स्ट्रगल किए बगैर वो दे दिया है। हाँ, स्टिल जो हम मजीद चीजें मांग रहे हैं वो चीजें नहीं नजर आ रही, तो हम इस बेसिस पे हम इनकार कर देते हैं या पीछे हट जाते हैं। तो हमें उस चीज से बचना चाहिए। और जब थॉट्स बहुत ज्यादा चल रही हैं तो इट्स ऑलवेज बेटर टू टॉक विथ समबडी टू गेन अ क्लैरिटी कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन। अगर आप चुप करके बैठे रहेंगे और शेयर नहीं करेंगे और बस बैठ जाएंगे और लेट जाएंगे और बिल्कुल थक हार जाएंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ये रियलिटी है कि टाइम आगे जा रहा है, टाइम नहीं रुकता, ना रुक सकता है। तो इट्स बेटर कि वट एवर यू आर गेटिंग, जस्ट just embrace that, just be grateful about that, and take a step forward rather than just sitting there in that particular place. What happens a lot, and I think you may have touched on this, is that, we get caught up in either the fear or the self-doubt, Insecurities. insecurities, absolutely, which is all based on fear. And fear was really meant, or it's only meant to alert us to physical dangers. Like, if there's a big saber-toothed tiger, standing in front of us, what do? We run, or we, fight, freeze, or flight. So it alerts us to the physical dangers, the cliffs, the storms, and whatever. But it wasn't meant to immobilize us, like if we needed to speak up in a meeting or to somebody, in particular. Maybe it's to, I don't know, try something that we've never done, which I guess that kind of relates to what you were talking about before. And maybe it's parents through unpredictability of what the next moment will be, but what this really says is that to our nervous system, that this is risky and what if we fail? But there is no fail. It's just taking that next step into the unknown. And I think the one thing that stops us is because we think that we have some sort of control, but we don't have any control in the end. We might have a decision to make, through our own free will, but ultimately Allah is in control. And so when this fear comes up, we have a lot of the overthinking, imagining that's the worst possible outcome, seeking control because we think that we are, although we're not. And then we start questioning, perhaps our own self-worth. But the truth is that, as I said, Allah's in control of everything. He's the one who protects us, who has control over us. Ultimately we're in his hands. We not literally, but we are. And so
what about if we let go of that, the overthinking or whatever it is that, or the fear, whatever it is that is stopping us to take a step forward. And Allah tells us, and put your trust in Allah. Allah is as sufficient as a disposer of affairs, because He knows and we don't. And I think when we really sink into that space of tawakkul, into this space of now, that overthinking falls away. The panic doesn't rise. It falls away. And that presence of just being, we can take that leap of faith to allow what is in front of us to be accepted. And that is amazing. Like, we kind of disrupt that fear loop that we get caught up in. Innocently, of course, we get caught up in it. Because of, at the end of the day, we think that we have control, but we don't. SubhanAllah. And I think Karen Kasira for sharing that. Beautiful, beautiful. Love that. Alhamdulillah, you're welcome. I just think that, when we really sink down into that tawakkul, not from here, because we can all get it here, it's a word, tawakkul. Yeah, we got to trust in Allah. It's all intellectual. But then when we come down and it sinks really in our heart, that's where we'll go, you know what? I'm going to try it anyway. Face the fear and do it anyway. I'm just picking out on fear, but it could be anything, At the end of the day, it is a fear that is stopping us from taking the opportunity that's in front of us. And we all fall victim to this, at some stage or another. I know I do, It wasn't that long ago, actually, that I was like, nah, and I thought I was making the right decision. And I did at that time, but then I realized, oh, yeah, got it now. Thanks Allah, for showing me a different way and going, yeah, next time I won't do that. So we always learn from these lessons that, to really fall into that tawakkul. And I love that, how we can do that. I don't know what something is coming over, and it's like ये जो doubts और ये जो confusions हैं, ये एक अलार्म है और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक लव लेटर है कि I'm there for you. You're not alone. Yes, you have so many thinking going on right now, but I'm still there for you and I'm closer to you. These are just the reminders from Allah to trust in Him. He knows better. Yeah. हमें नहीं पता हमें क्या ठीक है क्या नहीं ठीक हमें नहीं पता अल्लाह ताला ने खुद हमें बताया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि अल्लाह ताला किसी को भी फायदा नहीं पहुंचाता जब तक किसी को भी कोई फायदा नहीं पहुंचता जब तक अल्लाह ताला ना चाहे कोई किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकता और कोई किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह ताला खुद ना चाहे और अगर उसको कोई उस बंदे को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो उतना पहुंचता है जितना वो बंदा बर्दाश्त कर सकता है और अल्लाह ताला किसी भी शख्स पे किसी भी बंदे पे उसकी इस्तात से बढ़ के उस पे बोझ नहीं डालता और एक माँ है वो जब देखती है कि बच्चा घड़े में गिरने वाला है तो माँ क्या करती है कि माँ पैनिक होके उसको जो है वो बचाती है और अगर हम इसको इस तरह देखें कि अल्लाह ताला तो वो एक माँ है ठीक है और उसका तो उस माँ का इतना इख्तियार नहीं था कि व्हेन वी वर इन आवर मदर्स वूम तो वो हमें खाना भी खिला सकती कुछ दे भी सकती ठीक है तो कौन था पालने वाला वो ही रब तो था तो जब वो उधर हमारा ख्याल रख रहा था
तो फिर जब माँ इतना प्यार करती है तो फिर वो कितना प्यार करता होगा। वो तो खुद कहता है कि मैं 70 माओं से बढ़ के प्यार करता हूँ। तो इधर हमें ये पता चल रहा होता है, हमें अल्लाह ताला बता रहे होते हैं कि हर चीज पे इख्तियार अल्लाह का है। हर चीज पे इख्तियार अल्लाह का है। इवन दो आपके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है, आपके आगे कुछ भी नहीं है, आपके पीछे कुछ भी नहीं है, स्टिल अल्लाह इज देयर। Mm. और अल्लाह ताला whatever you are going through, he is there for you. और it's not like just for you particularly, it's Mm. like in some situations अगर आपके बच्चे दूर हैं या आपके स्पाउस दूर हैं या आपके लव्ड वंस आपके आपसे दूर हैं, तो आप अगर अल्लाह की अमान में हो तो नो मैटर व्हाट, वो भी अल्लाह ताला की अमान में ही है। अल्लाह ताला इज टेकिंग अ वेरी गुड केयर ऑफ देम एज वेल, बिकॉज जितना अल्लाह ताला आपसे प्यार करते हैं, अल्लाह ताला उनसे भी उतना ही प्यार करते हैं। Mm. जिस तरह हम अल्लाह के बंदे हैं तो वो भी अल्लाह के उसी तरह बंदे हैं। तो हमें तो इस चीज में घबराना ही बिल्कुल नहीं चाहिए। जो भी सिचुएशंस है जैसी भी है, इसमें हिकमत है, बहुत हिकमत है। यस, हम नहीं देख पा रहे, हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन नो मैटर व्हाट इसमें हिकमत है और अल्लाह की तरफ से हिकमत है। अल्लाह ताला आपको कुछ चीजों से दूर रख रहे हैं। ही नोज वो क्या कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पता है। ही नोज वेरी वेल वट एवर ही इज डूइंग। वो अपने उसने अपने किस बंदे से कौन सा काम लेना है, कैसे काम लेने हैं, उसको पता है उसकी ड्यूटी क्या है और कैसे है। तो हमें इतना फिगर आउट करने की जरूरत क्या है, हमें इतना आ, सर खपाई करने की जरूरत क्या है। तो जब अल्लाह ताला को पता है और उसका इख्तियार है हर चीज पे, तो फिर तो हमें ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी अल्लाह ताला पे ट्रस्ट रखना चाहिए। यस, बिल्कुल हाथ छोड़ के भी नहीं बैठ जाना चाहिए। वी हैव टू ट्राई, वी हैव टू देन पुट आवर ट्रस्ट इन अल्लाह। ऐसा नहीं है कि हम कुछ किए बगैर ही अल्लाह ताला पे ट्रस्ट कर लें कि ऑटोमेटिकली कुछ होगा और हो जाएगा सब कुछ। ऐसा नहीं है, वी हैव टू ट्राई, वी हैव टू डू समथिंग। सो जब हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह पे, अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करेंगे, तो अल्लाह पाक खुद ब खुद ही जो है वो रास्ते आसान कर देते हैं। हमारे तरीके से नहीं, हमारे तरीके वाले नहीं रास्ते आसान करते। उनको पता है कि व्हाट इज बेस्ट फॉर अस, हर तरह से, हर लिहाज से। तो वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो rather than taking things in our own hands, जब एक इतनी बड़ी पावर हमारे पास है, तो why not to hand all of our big stuff over to him, big and small as well, but right now अभी तो big stuff है ना, तो why not to, yeah, hand that all over to Allah, कि वो टैकल करें और वो सब कुछ करें। Mm. I found that it actually frees us from Yeah, all that's the I burdens, I from want all these struggles. I wanted to just touch on that actually, because when we really do sink into that space of tawakkul, tawakkul isn't passive. It's an active trust with Allah. It's saying that, Allah, I'll show up and I trust you with the outcome. And when we live like that, our physiological body shifts as well from that survival to surrender. And when we really surrender, we feel it in our bodies. Like if we are caught up in our thinking, I don't know about you, but I know myself, and I get, my shoulders, they tense up. So when I fall into that space of tawakkul, it's like I've let that thinking go and my shoulders soften. And, that tightness that you feel in your chest sometimes, that falls away. And so there's that expansion. And obviously our hearts, they feel soft again. And it's because we're no longer forcing things to happen, but we're following that space that Allah given us, has given us.
And I think that is a beautiful space to be in, because it's not about being right or wrong. It's just going with Allah's direction that He's created for us, with His wisdom. You know, He, as you said, He is the best of planners, and He knows what's good for us, not only us as individuals, but all of us. And, you know, it becomes the gate, when we trust that, it becomes like the gateway of closeness to Him. That real sinking feeling, not in a bad way, in a good way, of His presence. And that, you know, it really shows that, and you really feel that emotional peace, that inner peace, and the certainty, even if it feels uncertain at times, but you know that you can do it because you're trusting in Allah's plan for us, for ourselves, you know, whatever that is. I really love that. It just opens up those doors of opportunities that we may have, you know, been closed, or we may have closed that for ourselves. But when we just take a step through that door, we just never know how many doors in front of us will open even more. Subhanallah. इट्स जस्ट लाइक कि आप एक स्टेप तो उठाओ ना, आप एक कदम तो उठाओ। जब आप एक कदम उठाओगे तो अल्लाह ताला आपके लिए किस तरह से आसानियां करेगा, किस तरह से रास्ते खोलेगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन एक कदम आपको उठाना है। एक कदम आप उठाओगे तो अल्लाह पाक भी 10 कदम बढ़ाएंगे। तो यस, जितने भी बर्डन्स हैं, जितने भी शक्ल्स हैं, या जस्ट गो ऑन I was सिस। just going to say, it just popped into my head that when we take a step towards Allah, Allah, you know, runs towards us. So when we sink into that, you know, that space of tawakkul, beautiful things happen to us. And yeah, somehow I see that connection there. I don't know how, but, you know, if we're forcing that a different way, then, you know, we're going away from Allah. But when we come back to that, you know, it's like, oh, there's that, yeah, that connection again. Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे लाइक इतना फ्रीइंग होते हैं, आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार दुनिया की सारी दौलत और सब कुछ आपके पास है। सब कुछ आपके पास है, और या you Alhamdulillah. really don't have to do much then. No, that's true. Exactly. Exactly. Alhamdulillah. Alhamdulillah. What you would like to share at the end with us, sis? I guess just asking ourselves when we are pushing against something, what are we pushing against? You know, why are we not trusting in Allah? Where are we not trusting in Allah? Yeah, and noticing our inner self in those moments. What about you? सेम। जब इतनी बड़ी ताकत आपके पास है, जिसका हर एक चीज पे इख्तियार है, और जो खुद कहता है कि वो बादशाहों का बादशाह है और तमाम जहानों का मालिक है, तो फिर हमें बर्डन्स को अपने कंधों पे लेने की जरूरत क्या है? लाइक व्हाई नॉट टू जस्ट लिव एंड एंजॉय योर लाइफ, जो मिली हुई है, जो सांसें मिली हुई है। Just be grateful about it and just enjoy your life. Whatever is coming up, वो अल्लाह ताला की तरफ से, और उसमें हिकमत है। Just be in that moment, um, Yeah. be in that space where you can live your life, no matter what is coming up, whatever Yes. the challenges are, जो कुछ भी है, still वो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने वो उतना नहीं डाला हुआ जितना आप
नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो सब उतना ही है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। और लाइफ इज अ टेस्ट, लाइफ इज अ टेस्ट एंड वी हैव टू प्ले अकॉर्डिंगली। सो Mm. व्हाई टू रन अवे फ्रॉम ऑल दीज टेस्ट? टेस्ट हैं तो लेट्स फेस इट एंड जस्ट टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, दैट्स इट। Mm. Beautiful. Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह। Jazakallah khair for today. That sounds like a really good space to finish off, inshallah. Alhamdulillah. Waiyaki, waiyaki. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yeah, next time inshallah एक next episode के साथ आएंगे. Till then, take a very good care of yourself. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullah.